Hello friends, this is our last topic for the revision of the chapter solutions, and after this our next unit will be electrochemistry. So as you can see, these are some very important definitions जिसमें से क्वेश्चन जो है definitions की फॉर्म में ही आते हैं. These are 10 definitions from the chapter solutions. डेफिनेशंस की फॉर्म में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. So these are some of the definitions which were not done in the previous lectures. So now start with the first one, molarity. The number of moles of a solute dissolved in 1 liter of the solution means 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं, मोल्स प्लस लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मोलैरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट मींस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के जितने मोल्स मिलाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस. मोल प्लस किलोग्राम, मोलैरिटी. इसमें नोट करेंगे कि ये 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट हैं वो है मोलैरिटी, और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है मोलैरिटी. थर्ड वन, वेपर प्रेशर. The pressure exerted by the vapors of a liquid when both are in equilibrium at any particular temperature. किसी particular temperature पे एक liquid और उसके vapors जब equilibrium में आ जाते हैं एक closed container में, तो at that time जो pressure exert करते हैं vapors उसको हम बोलते हैं उस liquid का vapor pressure of that particular temperature. Fourth one is Henry's law. Another one important topic. जब हम किसी लिक्विड में किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं, then solubility of gas is directly proportional to the pressure of the gas above the liquid. Means the mole fraction X of any gas dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid means PA. तो लिक्विड के ऊपर किसी गैस का जितना प्रेशर ज्यादा होता है तो उसके अंदर उसकी सोल्युबिलिटी मींस मोल फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है. एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज KH कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है समटाइम्स वो भी आ सकते हैं. रॉल्स लॉ. द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड. कोई लिक्विड जो है उससे जब वेपर्स बनते हैं और उनसे जो प्रेशर लगता है तो एक मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसमें से एक कंपोनेंट का जो अपना प्रेशर होता है उसे बोलते हैं उसका पार्शियल वेपर प्रेशर, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HA of that component in the solution. And proportionality constant is P naught A means vapor pressure of the component in pure state. Actually Rolle's law and Henry law are the special cases of each other. In both cases the partial pressures are directly proportional to mole fractions, but this one is for gas in liquids and this one is for the vapor pressure of the liquid. But overall the formula, the relation comes to be in the same form, PA directly proportional XA. Number 6, previous lecture में हमने डिस्कस किया था इसको, azeotropes, the solutions which shows azeotropes, the solutions
which shows a constant boiling point like any pure compound. मीन्स ऐसे मिक्सचर्स जिनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है लाइक प्योर कंपाउंड्स, तो दे आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स, जो कि दो टाइप्स के होते हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट एंड नंबर 8 molar elevation constant and molar depression constant. We have formula delta TB is equal to Kb into molarity. If molarity is equal to 1, then delta TB is equal to Kb, and Kb is molar elevation constant. Same way, delta TF is equal to Kf into m, and if molarity is equal to 1, then delta TF is also equal to Kf. So this is definition. What? Molar elevation constant Kb is equal to the elevation in boiling point, means delta TB, of a solution having unity molarity, means molarity is equal to 1, and molar depression constant is equal to the depression in freezing point, means delta TF, of a solution having molarity 1, means Kf is equal to delta TF if m is equal to 1. Both the definitions 7 and 8 are very important. Number 9 want of factor I. इस फैक्टर को हम यूज करते हैं इन केस ऑफ द सब्सटेंसेस which shows abnormal properties or abnormal molecular mass due to association or dissociation, and this is equal to the ratio of observed colligative property, means experimentally observed property, divided by, means versus calculated property, जिसको हम कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते हैं, और जब दोनों डिफरेंट होती हैं तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी. एंड आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास वर्सेस एबनॉर्मल मोलर मास, मींस द मास व्हिच इज एक्चुअल molecular mass and abnormal the molecular mass which comes by the experiment observations, and their ratio is also equal to want of factor I. और I के लिए कुछ और भी हमारे पास फार्मूले हैं जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए गए थे. They can also be given in the form of definitions, but this one will be most correct. And last one is isotonic solutions. Any two or more solutions which are having same osmotic pressure or same number of moles, means अगर number of moles same है तभी उनकी colligative properties same, means osmotic pressure होगा same, or which are having the same value of colligative